Hello children, welcome back to the online session of 12 Geography. Myself, Mrs. Reshma Ravikumar from Science Department. In the last lecture, we have started chapter number 4, that is primary economic activities. In that, we have completed certain topics. We'll see topic covered in the last lecture. First, introduction. Second, definition of human economic activities and its types. Third, definition of primary economic activities. Fourth, characteristics. Fifth, analysis. Sixth, conclusion. Now first we'll see what are economic activities. Now human economic activities means the activity of making, purchasing or selling of goods and services. Then we have studied primary economic activities. Now children, what are primary economic activities? Primary economic activities refers to any kind of economic activity that involves collecting, extracting or harvesting natural resources. Then we have studied its characteristic. Number 1, primary economic activities prevalent in developing countries. Number 2, primary economic activities are located mostly in rural areas. Third, primary economic activities contribute small participation in total employment. Then fourth, primary economic activity uses more land but produce low wealth. Then we have analyzed primary economic activities that primary economic activities are vital not only for economy but for human also. They are the building blocks of other economic activities. Then we have concluded primary economic activities with some point. Then we have also studied types of primary economic activities. In that we have studied three types of primary economic activities. Number 1, gathering. Number 2, hunting. Number 3, lumbering. Okay. Now first, what is hunting? Hunting is the practice of seeking, pursuing or capturing or killing wild animal. Hunting was the primitive activity of man to obtain food. Second, we have studied gathering. Now, what is gathering? It is a primary activity in which people gather their requirements from nature. Third, we have studied lumbering. Now, what is lumbering? Lumbering is defined as felling of economic tree in the forest which can be used for domestic, industrial and commerce purpose. So this three types of primary economic activities we have studied in detail in the last lecture. Now in this lecture we'll study some more types of primary economic activities. First we'll study fishing. Now in this picture आप देख सकते हो three different types of fishing activity. Now we'll see what is fishing. Fishing is the activity of catching fish. There are many techniques which are used for catching fish, which include hand gathering, spearing, netting, angeling, and trapping. Now, one by one, we'll see the different techniques for catching fish. Number 1, hand gathering. Now, what is hand gathering? Hand gathering means to catch fish from hands. Second, spearing. Spearing means to catch fish by using spear. Children, what is spear? Spear is a weapon with pointed tip. Third technique is netting, to catch fish from the net. Okay, big nets such as trawl are used for catching fish for commercial purposes. Fourth is angeling. Angeling means catching fish with rod and line. And the last technique is trapping. Trapping means catching fish with the help of a trap. Now what is trap? Trap is a device which is designed to catch animals. So these are the 5 techniques which are used for catching fish. Number 1, hand gathering. Number 2, spearing. Number 3, netting. Number 4, angeling. Number 5, trapping.
Now moving towards the next topic, that is factors which impact development of fishing as a primary activity in certain areas of the world. Now there are many physical and human factors that impact development of fishing as a primary activity in certain areas of the world. Now first we'll see the physical factors. Now physical factors such as depth, shore and turbidity affects development of fishing. Let us see one by one. Now depth. Depth means gerai. In shallow ponds, sunlight penetrates up to the bottom, warms up the water and facilitate increase in the productivity. जिस भी वाटर बॉडी जो भी वाटर बॉडी शैलो है वहाँ पर सनलाइट पहुँचती है और फैसिलिटेट करती है प्रोडक्टिविटी को, फिश एक्वाटिक एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को. बट जो पॉन्ड्स या जो वाटर बॉडी गहरे हैं वहाँ पर सनलाइट पहुँच नहीं पाती और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी हिंडर्स होती है. सेकेंड फिजिकल फैक्टर इज शोर. The length of shore water plays an important role in the biology of aquatic animals. Longer shorelines enhances productivity because there we are finding a number of phytoplankton which serves as a, or you can say which is a main food of fishes. So इसीलिए shore में आपको ज़्यादा fishes मिलती हैं. Now next one is, next physical factor is turbidity. Now children, what is turbidity? Turbidity is the term for the suspended dirt and other particles in the water. ठीक है, कोई भी dirt particles जो होते हैं पानी में उसको turbidity बोलते हैं. Turbidity in water is caused by substances not present in the form of true solutions. Turbidity solution डालने से नहीं होती है, but in natural water, it is caused by clay, silt and organic matter, planktons, organism, etc. Natural water में turbidity कैसे cause होती है? चिपचिपी मिट्टी के कारण, छोटे छोटे silts के कारण, dead plants के कारण होती है. Now turbidity होने से कैसे development of fish में impact आता है? It restricts the penetration of light, thereby reducing the photosynthetic activity, hence acts as limiting factors for productivity. It also absorbs nutrients like phosphate, potassium, nitrogen from making them, जिसके कारण sunlight पहुंच नहीं पाता, again productivity hinders होती है. So in this way these three physical factors, depth, shore and turbidity, affects the development of fishing. Now the second factor, that is human factor. Now generally human do overfishing better, which results in the impact of fishing in some areas. Children, human living near the coastal areas have probably always used the ocean as a source of food. वो समुद्र में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको अपना सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, many stocks of our oceans are depleting, are reducing significantly. Another example is beta. Some fishing techniques are used by humans such as dredging and trawling. Now what is dredging? Dredging means clearing the seabed with the help of a dredge. Dredge is an apparatus which brings up the objects up from muds or river or seabed by scooping it. जितना भी नीचे seabed में सामान है उसको scoop करके ऊपर ले आता है. As a result, what happened? Lots of fishes and other products comes up. The second technique is trawling. Now, what is trawling? Is a method of fishing that involves pulling a fishing net through the water behind one or more boats. The net that is used for trawling is called a trawl. I told you earlier. The boats that are used for trawling are called as trawlers. ये बड़ी बड़ी
कोन शेप नेट होती है ट्रॉल, जिसमें एक साथ बहुत सारी मच्छी आ जाती है, जिनका यूज़ नहीं होता है वो भी आती है, और बाद में वो बाय प्रोडक्ट जैसे यूज़ होती है उनको डिस्कार्ड करते हैं. सो दीज टू ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग. Now next, though it started as a subsistence activity, fishing started as a subsistence activity, खुद को जीने रखने के लिए शुरू की गई एक्टिविटी थी. But now after modernization, it has become one of the major primary economic activity, especially in coastal region. Now we'll see some other factors which makes fishing a major primary economic activities. Now we'll see some other factors. Now some other factors में है wide expanse of continental shelf with presence of shallow water. Now what is continental shelf? Continental shelf is a portion of the continent that is submerged under the area of relatively shallow water. फर्स्ट पार्ट ऑफ ओशन इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि आइलैंड से थोड़े दूर तक ही, थोड़े दूर का पोर्शन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. वहाँ पर सनलाइट अच्छे से आते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत रहते हैं शेल्फ में. इट इज़ इसीलिए शेल्फ को फिशिंग ग्राउंड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल डॉगर बैंक. डॉगर बैंक इज़ अ वर्ल्ड फेमस फिशिंग ग्राउंड बिकॉज वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दे आर रिच इन फाइटोप्लैंक्टन्स. एज अ रिजल्ट बहुत सारी मच्छी आते हैं और वहाँ पर मछुआरे आराम से ह्यूमन उनको पकड़ लेते हैं. एक्सपेंस मीन्स एरिया. द सेकेंड रीज़न और सेकेंड फैक्टर्स जो है जो कि फिशिंग को एज अ मेजर ऑक्यूपेशन बनाता है इज confluence of warm and cold current. Now what is the meaning of confluence? Confluence means meeting point of two river, water bodies or ocean, whatever you can say. And what is current? Current means movement of water in a defined direction. So what happened beta? Confluence of warm, जब गर्म पानी और ठंडा पानी आकर जब मिलते हैं तो ऐसी जगह पे what happen? In this particular area, in this confluence area where warm water and cold water merges, what happen? Productivity, biological productivity such as plankton increases, which is a major food of fishes. As a result, development of fishes increases in this particular areas. Okay. Now for example, Japan is famous fishing ground. सबको पता है. Because in Japan, warm Kuroshio current, Kuroshio is the name of ocean, merges with cold Oyashio current. Oyashio again it is a ocean. Current favors fishing activities. ये दोनों ocean का गर्म पानी ठंडा पानी merge होता है. As a result, merge होने से पानी से productivity बढ़ती है, biological productivity बढ़ती है. ये रिस्पॉन्सिबल है ठंडा पानी और गर्म पानी मर्ज होने से. बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज होते हैं. एज अ रिजल्ट फिशेस वहाँ पर ज़्यादा आती है एंड इट बिकम्स अ फिशिंग ग्राउंड. नेक्स्ट, other factors which are favorable for fishing, development of fishing are number one, first, the traditional skill of some people who are naturally good at fishing. For example, Japanese and Chinese. The fishing activity has further developed over here. Now, Japanese people and Chinese people use some traditional skill जिसके कारण development of fish क्या होता है? Increase होता है. We'll see which type of technical skills are used by these people. Now see, the fishing activity develops in Japan and China on a very large scale, because they are using traditional skills for catching fish. That is why fishing activity develop in Japan and China. They use coromorant fishing method. Now what is coromorant? It is a type of a bird. They are using bird for catching fish. Let's see how. This is their traditional method.
They use coromorant fishing method, which is traditional method in Japan and China, in which fishermen use trained cormorants to fish in rivers. They tie a snare near the base of the bird's throat. वो बर्ड के गले के पास एक स्नेयर टाई कर देते. This prevent, जिसके कारण what happened, this prevent the bird from swallowing larger fish which are held in their throat, but the bird can swallow the smaller fish. स्नेयर बांधने के वजह से बड़ी फिश को वो swallow नहीं कर पाते, जिसके कारण जैसे ही वो फिशेस swallow आ जाती है उनके गले के पास, वो उनको वापस बर्ड को क्या करते हैं, बोट पे खींच लेते हैं. When cormorant caught a fish in its throat, the fisherman brings the bird back to the boat and has the bird spit the fish up. cormorant को वो स्पिट करने लगवाते हैं, तो वो स्पिट कर देती है बोट के ऊपर बड़ी बड़ी फिशेस को. In this way, by using this traditional method, through coromorant fishing activity developed in Japan and China. The second factor we'll see, large population of the country, lack of land, absence of other protein food make island country especially dependent on fish as a staple food. For example, Japan and Philippines. Now, fish is a staple food of many island countries like Japan and Philippines. Because large population of the country, lack of land, absence of protein food, they do fishing on a large scale. Next, for some people, fishing is the main occupation because they do not engage themselves in other activity. So for those people, fishing acts as an alternative occupation for the people who do not do any other job. Okay, so what happened? Their fishing acts as an alternative job. Next is use of technology has increased fishing activity. There are many modern technology has been introduced which increased fishing activities, like earlier people catches from net, but now due to improved technology beta we have got all new equipments like ट्रॉल्स, सेन नेट्स, मशीन ट्रैप्स एक्सेट्रा, जिससे हम आसानी से बहुत सारी फिशेस पकड़ सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर्स इज broken coastline provides excellent portal facilities. Now, what is broken coastline? First, what is coastline? Coastline means an area where land meets sea or ocean. Now, what is broken coastline? Waves जोर से erode होकर कोस्ट पर आती है तो वो ब्रेक हो जाती है बिकॉज दे रिलीज एनर्जी. जितनी ज़्यादा बड़ी वेव होती है उतनी एनर्जी वो रिलीज करती है एंड मोर सेडिमेंट एंड फिशेस दे ब्रिंग देमसेल्फ. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब वेव्स जोर से आती है वो टूट जाती है, अपने साथ बहुत सारा फिशेस और सेडिमेंट्स लेके आते हैं. सो वो दिस ब्रोकन कोस्टलाइन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पोर्टल फैसिलिटीज. खूब सारी फिशेस को लेकर आते हैं कोस्ट में. नेक्स्ट, cold climate in temperate region facilitate preservation of fish, but in tropical countries artificial refrigeration facilities have to be developed. जब आप फिश बाहर रखते हो ठंडी कंट्री में, ठंडी जगह पे, वो खराब नहीं होती. But in tropical countries we require artificial refrigeration because fish is a perishable item, जल्दी खराब होती है. तो हमको क्या चाहिए, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन होना चाहिए अदर देन टेम्परेट कंट्रीज में, सो दैट फिशिंग एक्टिविटीज डेवलप हो, वहाँ पर फिशेस खराब ना हो. नियर बाय फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड फॉर शिप बिल्डिंग. आसपास के जितने भी फॉरेस्ट है वो लकड़ी प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बोट बनाकर फिशिंग एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकें. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि फिशिंग को आज एक familiar primary occupation बना रहे. Okay, now moving towards
Next type of primary economic activities, that is animal husbandry. Now, what is animal husbandry? In simple term, it is the science of breeding and caring of farm animal. Now see, animal husbandry is the branch of agriculture which is concerned with animals that are reared for meat, fiber, milk, eggs और other products. एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें स्पेशली एनिमल्स को रेयर किया जाता है, उनको अच्छी अच्छी फॉडर खिलाया जाता है सो दैट इन टर्न वो आपको अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे सच एज मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स etc. It includes day-to-day care, selective breeding and the raising of livestock. ये डे टू डे केयर होनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, तभी आपको एनिमल एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छे से दे पाएगा. नेक्स्ट, if we consider the latitudinal distribution of animal husbandry in the world, it is located between north and south latitudes. अगर आप देखोगे कहाँ कहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होती है तो ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में प्रैक्टिस होती है. नेक्स्ट, नाउ क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the development of animal husbandry. It is more developed in northern hemisphere. Presence of grassland in all continent has led to distribution of this occupation. तो क्लाइमेट वाइज आप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा डेवलप हुई है. एनिमल हस्बेंड्री वहाँ डेवलप होती है बेटा जहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर अ गुड क्वालिटी ऑफ अ हेल्दी क्वालिटी ऑफ ग्रासेस for the animals so that in turn they will give you a good quality of product. Okay, so climate is one of the most influencing factor in the development of animal husbandry. Next, this occupation is influenced by advanced technology, market, availability of large estate. It has developed on a commercial basis in North America, South America and Australia. Next, animal husbandry in North and South America is carried out with the help of advanced technology on a commercial basis. Means अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो एनिमल हस्बेंड्री कैरी की जाती है बेटा, कैरिड आउट की जाती है, दैट इज़ फॉर कमर्शियल बेसिस. मीन्स प्रोडक्ट्स बेच के मनी अर्न किया जाता है. Dense forest, inhospitable climate, low quality fodder in equatorial region has discouraged the development of animal husbandry. इक्वेटोरियल रीजन में ये सारे रीजन होने के कारण, फॉरेस्ट घने होने के कारण, हार्श क्लाइमेट के कारण, लो क्वालिटी ऑफ फॉडर अवेलेबल होने के कारण वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिस्करेज होती है, बिकॉज दीज फैक्टर्स हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इक्वेटोरियल रीजन. Next, agriculture and animal husbandry is done together in the man's area, wherever man lives, wherever settlement of human beings are there, where both of these primary economic activities go hand by hand because they are allied activities. The activities which is related to each other. Both these activities are related to each other. So in human settlement, these two primary economic activities are done together. Okay, so this was your animal husbandry as a primary economic activities. Now moving towards the next type of primary economic activities, that is mining. Now see, you are seeing in this picture different types of mining: surface mining, underground mining. Now we'll see what is mining. Now, mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth. Mining means minerals को extract करना earth surface के अंदर से. Mining things from the ground is called extraction. जब हम minerals निकालते हैं उस process को बोलते हैं extraction. Mining can include extraction of metals, minerals like coal, diamond, gold, silver, copper, tin, iron. Some mining is done by scraping away the soil from the top of the ground. This is called surface mining. कुछ mining surface mining होती है, उसमें थोड़ा सा surface earth का
डिग करके मिनरल्स को निकालते हैं, दैट इज सरफेस माइनिंग। और उसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, मतलब डीप अंडरग्राउंड जाके मिनरल्स हम नहीं निकालते, सरफेस को स्क्रैप करके मिनरल्स निकालते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस माइनिंग। बट सम माइनिंग आर कॉल्ड एज अंडरग्राउंड माइनिंग बिकॉज उसमें हमको डीप अंदर जाकर we are taking the help of shaft. Now modern technologies are available shaft, एक shaft के थ्रू हम अंदर जाकर minerals को निकाल सकते हैं. So there are two types of mining. One is surface mining and the other one is underground mining. Next, a worker in mine is called a miner. जो इंसान माइन में काम करता है उसको बोलते हैं बेटा माइनर. Underground mining is a dangerous job. Why? Because many mines have accident. वहाँ पर accident होने के chances ज़्यादा होते हैं, इसीलिए it is a dangerous process. 100 of miners die every year from accident. 100 of जो workers हैं वो हर साल every year they die because of underground mining. Many safety rules and special safety equipment is used to try and protect miners from accident. बहुत सारे हम लोग safety rules follow करते हैं, safety equipment use करते हैं to avoid accident. Next, for example, underground coal mining is very dangerous. Why? Because coal can give off poisonous and explosive gases. Some towns are called as mining towns because people live there, they can make money as miners or by doing things for miners. वो माइंस में ही काम करते हैं, इसीलिए वो जगह को वो उस टाउन को माइनिंग टाउन बोलते हैं. Next, due to mechanization, due to improved technology, due to improved transportation, this occupation, mining, has developed on a large scale and many industries related to minerals locate near mining. Improved machines आने के कारण, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव्ड होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ये माइनिंग एरियाज़ के आसपास लोकेट हो गई हैं सो दैट उनको रॉ मटेरियल्स मिले और वो इंडस्ट्रीज़ रन करें. As a result, in turn, what happens when industries are increases, the economic development of the country also increases. Now, next we'll see the geographical explanation of mining. Now, man has been using minerals since ancient times. पुराने ज़माने से human being minerals use कर रहे हैं. Minerals have been used for making different things such as weapons, tools, jewelry, medicine, utensils, etc. The various stages of cultural evolution of man are also related to the use of minerals. पुराने ज़माने से हम लोग मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं. अलग अलग कल्चरल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स बताती हैं कि दैट वी आर यूजिंग मिनरल्स. एट द एंड ऑफ स्टोन एज मैन डेवलप स्किल ऑफ यूजिंग मिनरल्स. जब स्टोन एज ख़त्म हो रही थी तभी ह्यूमन बींग ने स्किल्स डेवलप किए मिनरल्स को यूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके से. वेरियस पीरियड लाइक द कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, Iron Age, Atomic Age, respectively, were delineated accordingly. अलग, ये तो हमने स्टोन एज का मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग ने तभी स्किल डेवलप करी थी मिनरल्स को यूज करने की. ऐसे अलग अलग जो ये एजेस हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ ह्यूमन बीइंग हैज यूज्ड मिनरल्स. Man's progressive development can be attributed to the exploitation of minerals. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस हो रहा है, इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस हो रही है, वो बताता है कि कैसे मिनरल्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन रिलेट द टू टाइप्स ऑफ माइनिंग, सरफेस माइनिंग दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग. पहले वी वे नॉट हैविंग एनी टेक्नोलॉजी, सो पीपल वे डूइंग सरफेस माइनिंग. जितना उनके पास मस्कुलर एनर्जी होती थी उतनी ही ताकत लगा के वो मिनरल्स निकालते थे. बट नाउ आफ्टर मॉडर्नाइजेशन व्हाट हैपेंड, वी हैव गॉट एवरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एवरी न्यू टेक्निक्स, एवरी न्यू इक्विपमेंट इन अवर हैंड, सो दैट हम क्या करते हैं, अगर हमको ज़रूरत भी नहीं है तो भी हम बेटा मिनरल्स निकालते हैं.
गांधी जी ने बहुत अच्छे से बोला है कि आवर अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड, इसलिए जितना चाहिए उतना ही लो. डोंट एक्सप्लॉइट द थिंग इफ यू आर हैविंग all technology in your hand. He has even started exploiting of minerals, oil and natural gas reserved from the sea and ocean beds too. Why? क्यों उसने exploit करना शुरू कर दिया? लालच में. Because he has got every new technology. पहले वो नहीं करता था क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. As a result, what happened? Our minerals are depleting. Next, man cannot manufacture the minerals that are found naturally in the earth crust because distribution of mineral is highly uneven in the world. This activity depends solely on the presence of mineral. Human being minerals को तभी यूज कर सकता है जहां उसको वो मिलेंगे, because it is unevenly distributed. हर जगह पर minerals नहीं है. ओके, सो जहां पर मिनरल्स अवेलेबल है ह्यूमन बीइंग को उसको रैशनली यूज करना है. इवन दो द मिनरल्स मे बी प्रेजेंट, एक्चुअल माइनिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर. मिनरल प्रेजेंट भी है तो भी कुछ माइनिंग डिपेंड्स होती है सेवरल फैक्टर्स पे, जैसे कि दीज फैक्टर मे बी द जियोलॉजी ऑफ द रीजन, value of minerals, climate, capital, investment, technology, skilled labor, etc. अगर मिनरल है भी तो भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मिनरल्स को वो यूज कर सकता है. ये कौन से फैक्टर्स हैं? जियोलॉजी ऑफ द, इंसान को पता होना चाहिए कि जिस जमीन को वो डिग कर रहा है वहां पर मिनरल्स है या नहीं, तभी उसको डिग करके माइन करके वो मिनरल्स निकाल सकता है. अगर उस जमीन में अंदर मिनरल्स ही नहीं, आप डिग कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट. सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक्चुअल तरीके से वो माइनिंग कर सकता है. नेक्स्ट, उसके पास माइनिंग करने के लिए पैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए. देन उसको मिनरल्स का वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन से मिनरल्स की क्या वैल्यू है. देन ही शुड हैव ऑल टेक्नोलॉजी and he should have skilled और at the same time labor होना चाहिए, तभी वो माइनिंग एक्टिविटीज को प्रॉपर कर सकता है. ओके, सो नेक्स्ट we'll continue in the next lecture. Till then, be safe and home. Thank you very much.